Honorable members, now special mentions. माननीय श्री सुखेंदु शेखर रॉय. Special. Yeah, let me have a pause for a minute because let the outgoing members माननीय सदस्य go out of the. We are having a special mentions, please. Let them go, sir. Let them go. Please, a special mentions, please. प्लीज अपने अपनी सीट पर बैठे. स्पेशल मेंशन हम लोगों ने लिया. प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए. जिनको जाना है जाने दीजिए ना. प्लीज माननीय सदस्यगण, माननीय नाजिर हुसैन जी, स्पेशल मेंशन हो रहा है. प्लीज अपनी सीट. ठीक है सर. थैंक यू सर. My subject is restoration of public immigration service at Mohdipur in Malda. Public immigration service at Mohdipur immigration checkpost in Malda district of West Bengal for movement of common citizens such as tourists, patients, exporters and importers of both India and Bangladesh was suspended in the wake of COVID-19 pandemic. While many other international immigration checkposts bordering Bangladesh have since been opened for movement of immigrants following phenomenal improvement of COVID-19 situation, the immigration checkpost in Mohdipur in Malda district of West Bengal has not yet resumed the immigration services. I would therefore urge upon the government to initiate appropriate steps so that the severe constraints being confronted by the local immigrants are removed and for resumption of pre-COVID immigration services at Mohdipur immigration checkpost without any further loss of time. Thank you, sir. Thank you. रामनाथ ठाकुर जी. धन्यवाद सभापति महोदय. सरकारी सेवा में जाने हेतु अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र को हर वर्ष नवीकरण कराना पड़ता है. यह क्रीमी लेयर हेतु तय आय मात्र 8 लाख के मानक को पूरा करने हेतु कार्मिक मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के कारण बाध्यकारी है, पर ऐसा किसी और वर्ग के लिए नहीं है. एक बात गौर करने योग्य है कि ओबीसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र हर वर्ष उसके द्वारा दिए गए आय से जुड़े एफिडेविट या दस्तावेज के आधार पर संबंधित तहसील से नवीकरण कर दिया जाता है. यह सारी प्रक्रिया देखने में आसान लग रही है, पर ऐसा है नहीं. इस प्रक्रिया के कारण ओबीसी अभ्यर्थी और तहसील का कार्य अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है और ओबीसी अभ्यर्थी पर भाग दौड़ में आर्थिक दबाव भी पड़ता है. कई मामले में ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें ओबीसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र समय पर नवीकरण न होने के कारण उसे कई सेवाओं से वंचित रहना पड़ता है. मेरी मांग है कि सरकार ओबीसी अभ्यर्थी हेतु तय हर वर्ष जाति प्रमाण पत्र के नवीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु सरकारी सेवाओं में आवेदन के समय आय का एफिडेविट लेकर अनुमति दे. आखिरकार एफिडेविट और आय दस्तावेज के आधार पर जाति प्रमाण पत्र का नवीकरण तहसील में होता है. इससे तहसील का कार्य कम होगा और ओबीसी अभ्यर्थी पर अनावश्यक आर्थिक दबाव और सेवाओं से वंचित होने का खतरा भी समाप्त हो जाएगा. धन्यवाद. डॉक्टर सस्मित पत्रा. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. The subject of my special mention is demand for special category status for state of Odisha as it faces frequent natural disasters. Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, has been repeatedly demanding for special category status for the state of Odisha on account of the massive economic loss that the state faces due to the natural disasters like cyclones, floods, drought that hit the state almost every year, because of which more than 80% of geographical area and nearly 90% of the population of Odisha are vulnerable. However, successive union governments have not heeded to this very well-justified demand by Shri Naveen Patnaik and the Odisha government.
The union government should take into account that the guidelines of special category status fails to factor in aspects like proneness to natural disasters like floods, cyclones, drought, etc., and low rate of mobilization of resources. The changing of sharing pattern of various centrally sponsored schemes from 90:10 ratio to 60:40 ratio has already burdened states like Odisha. Instead of providing a helping hand, the union government has been citing special category status guidelines due to which it cannot grant Odisha the special category status. However, such guidelines by the union government are not cast in stone and can be amended just as many legislations, rules, guidelines, and procedures are amended regularly. I therefore urge the government of India and reiterate the demand made by my leader and Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, to accord special category status to Odisha on account of natural disasters it faces and the damage done by them to the 4.5 crore people of Odisha. Thank you. Thank you. Sri Anil Desai? Not present. Srimati Bandana Chavan? Thank you, Vice Chairman, sir. So my special mention is regarding need for amending the POCSO Act to revise the age of consent. So this year marks the 10th anniversary of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, commonly referred to as POCSO. While its enactment was definitely a watershed moment in the history of child rights in India, we must also take this opportunity to reflect on some of its shortcomings. Section 2D of the POCSO Act has defined a child as an individual under the age of 18. This has led to sufferings of many young couples between the ages of 16 to 18 who are in consensual and non-exploitative relations. Because the consent of a child is immaterial, a genuine romantic relation which has mutual consent from both sides can get embroiled in the criminal justice system. Several high courts of the country have recognized the normalcy of these relationships and pointed out that the Act was meant to protect minors from sexual abuse and not to criminalize consensual romantic relationship amongst adolescents. There have been several instances of misuse of POCSO Act, especially by parents who want to punish their children from attempting to exercise their autonomy in who they want to marry. Many a times a couple elopes fearing opposition from parents, resulting in a situation where families file a case with the police who then book the boy for rape under POCSO Act. Hence, there is an urgent need to reform the law to revise the age of consent and prevent the criminalization of older adolescents engaging in consensual and non-exploitative acts. Thank you, sir. Thank you. Sri Ram Sakal? धन्यवाद। मेरे गृह जनपद चौपन चुनाव रेलखंड कोयला व खनिज ढुलाई के रेलखंड एवं कोल इंडिया का कॉरिडोर है। इस रेलखंड के दोहरीकरण होने से उत्तर प्रदेश के आदिवासी अंचल के साथ साथ झारखंड राज्य की एक बड़ी आबादी भी लाभान्वित होगी। आदिवासी अंचल के लिए लाइफ लाइन का काम करेगी। इस रेल खंड से जुड़े चौपन सिंगरौली, चौपन गढ़वा, सिंगरौली कटनी तथा शक्तिनगर करेला रोड खंडों पर दोहरीकरण निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जो कि मार्च 2023-24 तक पूरा होने का लक्ष्य है। एकमात्र रेलखंड चौपन चुनार पर ही दोहरीकरण का कार्य कराया जाना शेष है। इस रेलखंड की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 में हो चुकी है। इस रेलखंडों पर दोहरीकरण निर्माण कार्य पूरा होने से रेलखंडों पर सड़क मार्ग की जगह रेल से कोयले की ज़्यादा से ज़्यादा ढुलाई, पर्यावरण शुद्धता, यात्री मालगाड़ियों का संचालन भी बढ़ेगा तथा रेल की आय में वृद्धि होगी। चौपन चुनार रेलखंड का फाइनल लोकेशन सर्वे कार्य उत्तर रेलवे द्वारा पूर्ण कर रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय में भेजा जा चुका है। आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निवेदन करेंगे कि उल्लेखनीय तथ्यों को दृष्टि रखते हुए दिल्ली चौपन चुनार रेलखंड रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल मामले की आर्थिक समिति
द्वारा धनराशि स्वीकृति किए जाने की कृपा करें, जिससे यह रेल दोहरीकरण का कार्य परियोजना शीघ्र पूरा हो सके। धन्यवाद। श्री ब्रिजलाल जी। Thanks, Deputy Chairman, sir, for giving me opportunity to present my special mention on medical education. Sir, medical education has been the first attraction of large number of students in India. Government of India has taken a large number of initiatives to remove the hurdles by way of increasing the seats at undergraduate UG and postgraduate PG level by increasing medical colleges in government and at private level. Despite redoubling the effort, still a lot need to be done. Currently, 96,077 seats are available at UG level and 51,712 at government institutions and 44,365 seats at private level. Similarly, 49,790 seats are available for PG students, out of which 30,384 are in government institution and 19,406 are in private medical colleges. Last year, UG examination, 17,64,571 students appeared for the exam to compete for 96,077 seats, and PG, 2,06,301 students appear for 49,790. It is understood that for UG exam, either student keep on repeating or join other branches to settle down in life. In case of PG, more than 1,50,000 students either keep on repeating or end up with MBBS only. Situation is severe for girls with MBBS degree, as neither they are gainfully employed nor paid respectable remuneration. Providing one or two year capsule course, are introducing College of Physician and Surgeon, CPS courses like Fellow of College of Physician and Surgeon, FCPS, with all India acceptability. With the introduction of CPS and FCPS with all India acceptability, will go a long way in helping especially the MBBS girl student in settling down in life at least by 30 years of age. I therefore urge the government to look into this matter. Thank you, sir. Thank you, Sri S. Selva Ganapati. Honorable Deputy Chairman, sir, my special mention is finding a permanent solution to prevent sea erosion in Puducherry and adjoining Tamil Nadu areas. I would like to bring to the notice of this August House a very important matter wherein the dredging has become an annual ritual to remove 7.3 lakhs cubic meter of sand that accumulates every year. In the recent Mendoza cyclone, the river mouth has been again clogged after 80% of the work had been completed. Therefore, it is imperative to find a permanent solution to prevent the clogging of the estuary. Sea erosion is a permanent feature between Marakanam and the Kadalur in Tamil Nadu state, with a few pockets of Puducherry territory coming in between. Karaikal, a district of Puducherry, is also flanked by Tamil Nadu areas. As a result, dumping of boulders and construction of grounds by the two governments has only resulted in inundating the neighboring areas. This continues to be a friction between the fishermen communities. Even during the Mendoza cyclone, 14 houses at Pilachawadi village have been washed away by the sea. At the same time, the villages of Bommayarpalayam also have agitated during the recent cyclone. In such a situation, only a coordinated action by the two governments
would bring a permanent solution to the long pending demand of the government. I request the Honorable Union Minister for Shipping to conceive such a permanent solution for the Puducherry port also by directing the NIAT, IIT Chennai or any other competent institute to recommend a project combining Tamil Nadu and Puducherry. This may please be treated as most urgent before the problem goes beyond control. Thank you. Thank you, Sri Ajit Kumar Bhuya. Thank you, Vice Chairman, sir. The subject of my special mention is geographical indication tax required for Assam city. Sir, GI or geographical indication is a tag that is attached to products to inform buyers about its location of origin. It's a patent of sorts that is globally recognized and conferred on products that have distinctive qualities by virtue of being produced or made in a specific region. Uniqueness is not a modern day concept. When sailors like Christopher Columbus braved uncharted seas to look for spices and exotic goods, they did so because they were looking for something unique which was not be found anywhere else. The specific geographical origin of tea plays an important role in identifying its qualities and developing its reputation. Assam produces both orthodox and city teas, and a widely popular Assam orthodox tea has the GI tag since 2008. Since we do not have a specific GI tag for Assam city like Assam orthodox teas, this situation is only getting bad to worse, affecting the already ailing industry. The GI tag will ensure that the quality of Assam CTC teas offered to the buyers remains consistent, which in turn shall support better price realization for the entire industry. I urge upon the government, through you, sir, should take up the allotment of GI tag to Assam city on a war footing so that the same cannot be misused and branded without the permission of the tea trade regulatory bodies. Thank you. Dr. Ram Thambudurai. Chairman, sir, Vice Chairman, sir, our Railway Minister is here as a special mention regarding the stoppage of the Sadapti train at Jolarpet Junction. That is why I am with special mention, sir. I would like to bring to the following grievance of the people of Jolarpet to your kind attention for resolution. Jolarpet in Tamil Nadu is a major junction where the footfall of the people is increasing day by day, and a new district was also carved out consisting of Jolarpet. With a massive increase in activities of the people, they feel that there is a need for stoppage of a train at Jolarpet to cater to their daily needs. In this connection, I request you to kindly arrange and give an stoppage of Sadapti Express running between Chennai and Bengaluru, 12:027 and 12:028 at Jolarpet Junction, which is a major demand of the people of Jolarpet. I request you to kindly look into the just grievance of the people of Jolarpet and do the needful so that the Sadapti Express between Chennai and Bengaluru stops both ways at Jolarpet Junction. Thank you very much. The Minister may consider it, sir. Thank you. Thank you. Sri Mithilesh Kumar. माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का सब्जेक्ट हमारा है मैलानी फर्रुखाबाद रेल लाइन परियोजना। माननीय उपसभापति महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मैलानी फर्रुखाबाद नई रेल लाइन प्रतियोगिता परियोजना की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मैलानी फर्रुखाबाद नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु इस परियोजना पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। लगभग 150 किलोमीटर
लंबी इस रेल परियोजना के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगी तथा इस पिछड़े क्षेत्र में व्यवसाय तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा रेलवे की आय में वृद्धि होगी। यह नई रेल लाइन विकास के नए आयाम स्थापित करने के साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी बन सकेगी। सैन्य छावनियों के कारण शाहजहांपुर और फतेहगढ़ जैसे सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक केंद्रों का जुड़ाव सीधे मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी तथा टनकपुर स्थित छावनियों से होने से संवेदनशील रहने वाली उत्तरी सीमा को मजबूती मिल सकेगी। अतः सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि इस जनहित की परियोजना मैलानी फर्रुखाबाद नई रेल लाइन पर आगामी बजट पर धन उपयुक्त करके यथाशीघ्र कार्य का शुभारंभ कराने की कृपा करें, जिससे इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश को सामरिक मजबूती मिलेगी। माननीय रेल मंत्री भी मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री किशन लाल पवार। धन्यवाद आदरणीय उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बीपीएल कार्ड 2011 की जनगणना के आधार पर बनाए गए थे। इसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में गरीब आदमियों के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना चालू करके आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए, लेकिन वह भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही बने। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि 2011 से लेकर अब तक 10 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और इन 10 सालों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अतः उस जनगणना के आधार पर कार्ड बनाना उचित नहीं है। तो उप सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम सरकार से अनुरोध करता हूं कि 2021 की जो जनगणना का कार्य चल रहा है उसको जल्दी पूरा किया जाए और नए न्यू बीपीएल कार्ड और न्यू आयुष्मान भारत कार्ड 2021 के आधार पर बनाए जाए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जवाहर सरकार। Sir, I would like to draw the attention of the House to the decline in the number of farmers who received the Prime Minister's Kisan Samman Nidhi, that's PM Kisan. Many Kisan families make or break even with the assistance of just rupees 6,000 per year paid in 3 installments of rupees 2,000 each under this PM Kisan scheme. According to the Agriculture Ministry's response to a right to information query, the 11th installment of funds has fallen by as much as 67%. There is a sharp drop from 11.84 crore farmers who received the first installment back in February 2019 to just 3.87 crore farmers who received the 11th installment of rupees 2,000 in their accounts in May-June 2002. The latest 12th installment was disbursed in October. Sir, the Agriculture Ministry may need to examine and locate the reasons why this installment-wise payment support system to farmers is falling so sharply. I urge the government to look into the matter and take necessary steps. Thank you, sir. Thank you. Sri S. Pangnan Konak. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. My subject is request for ambulance services in railways. I take this opportunity to congratulate the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Honorable Railways and Communications Minister Shri Ashwini Vaishnav on the success of Vande Bharat trains and the announcement that the railways are producing Vande Metro trains. As announced that the design process is going on, I take this opportunity to request a cabin in long-distance trains be equipped with ambulance facilities. Air ambulance is the only option for patients from far-flung areas, and it has its limitations for the common people due to the high charter costs and availability, especially for patients from far-flung areas like the Northeast.
Patients from my state requiring ventilator assistance had to be taken by road from Nagaland to Delhi and vice versa. Having equipped ambulance facilities on trains will serve patients requiring specialized life-saving treatments, better convenience, accessibility for treatment, and bring down cost incurred by chartering air ambulance. I therefore urge the government to look into the matter. Thank you. Thank you. Sri K. Banlavena. Yeah, thank you, Honorable Vice Chairman. My topic is a common problem being faced by red oil palm growers in the northeastern states. First of all, I want to express my grateful thanks to the Honorable Union Minister of Agriculture, Sri Narendra Singh Tomarji, for his statement concerning the welfare of oil palm producers of the northeastern state. He mentioned in his statement that the central government promised the oil palm growers that the viability gap payment must be given to them. This is good news for poor producers of oil palm in the northeast state. It is also a great pleasure to hear that the union government is preparing to extend oil palm production up to 6.5 lakhs hectares of land throughout the country, among which... Yes, you have to read from the text that you have submitted. You're Yeah, reading among from which something else. 3.28 lakhs hectares are within the northeastern state. The soil, climate, and annual heavy rainfall of the northeastern state is more suitable for growing red oil palm. Mizoram has started oil palm plantation since 2008 and is the first state in the northeast state that had grown red oil palm. The farmers were so happy in the beginning. However, Honorable Vice Chairman, sir, unfortunately, some farmers have cut down their oil palm plantation after 10 years due to lack of buyers of palm seeds. You are supposed to read from the text submitted by you. You are not reading from there. So please stop. Yeah. And the farmers in Mizoram could sell their palm subject is seeds noted. only for ₹5. Yeah, your subject is noted. Now you stop because you are not reading from the text you have submitted. This is something else you are reading. So thank you. Thank you. Yeah, excuse me, sir. Yeah, let me continue, sir. The next speaker is Sri Ghansham Tiwari ji. Subject ही दूसरा हो रहा है. Ghansham Tiwari. माननीय उपसभापति महोदय, You can submit again because you are not reading from the subject you have given. Yeah, Tiwari ji. माननीय उपसभापति महोदय, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पेयजल की समस्या के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय शेखावाटी क्षेत्र में देश में वीरों, भक्तों, उद्यमियों, किसानों, किसान आंदोलन व शिक्षा के लिए माना जाता है। आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें शेखावाटी के जवानों ने अपना बलिदान देकर देश की रक्षा की। इसी शेखावाटी क्षेत्र के औद्योगिक घरानों ने औद्योगिक क्रांति के लिए कार्य किया। शेखावाटी क्षेत्र में भामाशाहों ने शिक्षा की अलग जगाई, जिससे आज़ादी के बाद आम जन के भागीदारी बनकर संपूर्ण साक्षरता वाले शिक्षित जिलों में किसानों ने नवाचार अपनाकर श्वेत क्रांति और हरित क्रांति में अमूल्य योगदान दिया। इसी प्रकार साधु संतों ने इस क्षेत्र को भक्ति का केंद्र बनाया है। प्रवासी राजस्थानियों ने इसे दुनिया में कार्य करके विदेशी मुद्रा अर्जित की है। परंतु महोदय, यही शेखावाटी क्षेत्र अब गिरते जल स्तर के कारण पीने और सिंचाई योग्य पानी की घोर कमी से अत्यंत ग्रस्त है। वर्तमान में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में चंबल व राजस्थान केनाल से सिंचाई की जा रही है। अतः पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट भी है, लेकिन शेखावाटी के सीकर और झुंझुनू में पेयजल व सिंचाई की किल्लत हो गई है। कुछ वर्षों पूर्व केंद्रीय जल आयोग ने शेखावाटी क्षेत्र के लिए गंगा व यमुना के फ्लड वाटर से पानी देने की संभावना व्यक्त की थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस कारण शेखावाटी क्षेत्र में
पानी की समस्या आज भी बनी हुई है। अतः आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस वीरों, भामाशाहों, उद्योगपतियों की धरा शेखावाटी में पानी के समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तुरंत कदम उठाए जाए। Thank you. धन्यवाद। Dr. Kanimoji NBN Somo. Thank you, sir. Sir, as a member from the medical fraternity, I would like to speak the status of 3 important diseases for which the government has to take proactive steps. Hemophilia is a rare congenital bleeding disorder. The blood doesn't clot in the normal way because it doesn't have enough blood clotting proteins. It requires protocol of prophylactic care to prevent bleed. The government should have a comprehensive program, Ashadara, which is currently under preview for approval by the Ministry of Health. There is a need to establish capacity and capability building and monitoring patient outcomes. The government should announce tax-free for all the drugs for the prophylaxis treatment. Rare disease management is still in nascent stage. In Jan 2021, the Delhi High Court has directed the Union government to initiate new national health policy for rare diseases by 31st March 2021. Unfortunately, the government has made no new allocation for such a plan. There are 70 million people in India with rare diseases. Globally, rare diseases are responsible for 35% of deaths in the first year of life. 30% of children with rare diseases will not live to see their 5th birthday. These numbers are more drastic in India. Efforts for decentralizing care delivery and maintenance of public health registry to gather real-time information on patients to support research, planning and surveillance is mandatory. Spinal muscular atrophy is a neurodegenerative condition associated with high morbidity and mortality. The government has to create a hub and spoke model with the support of Center of Excellence with special grants to enable better access. Efforts to be taken to improve the quality of life for patients and caregivers, and for a multidisciplinary approach like co-creating awareness and early detection of SMA and clinical skill building of healthcare providers. There is a need for comprehensive state-specific policy. Therefore, I urge the Union government to provide adequate care and funds for the treatment of hemophilia, spinal muscular atrophy, and other rare disease management. Thank you. Thank you. The next speaker is Dr. Kirurilal Meena. उपसभापति महोदय, देश में बढ़ती हुई जनसंख्या से देश में उत्पन्न होने वाले संकट के संबंध में एक सर्वे में मानव अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण से बताया गया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह खतरा और अधिक गंभीर हो जाता है क्योंकि विश्व का केवल 2.4% भूभाग हमारे पास है और विश्व की कुल जनसंख्या का हम 17.74% भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ को पार कर चुकी है। कम क्षेत्रफल होने के बावजूद इतनी अधिक आबादी का ही परिणाम है कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से कम पड़ते जा रहे हैं तथा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय स्थितियां विस्फोटक होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि देश में प्रगति नहीं की, परंतु सारे विकास को जनसंख्या रूपी दानव निगल रहा है और सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही जनसंख्या के सामने ये विकास ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रहा है। इतनी बड़ी आबादी के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, सड़क, एयरपोर्ट, प्रशासनिक कार्यालय, कारखाने और आवास उपलब्ध कराने में खेती तथा जंगलों की जमीन घट रही है। फलस्वरूप भविष्य में खाने को पर्याप्त अन्न भी पैदा नहीं होगा और इतने अधिक लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। प्रदूषण, जल एवं खाद्यान्न संकट के कारण बीमारियां अपने चरम पर होंगी। चारों ओर अपराध, भुखमरी व गरीबी के कारण व्यवसाय भी ठप पड़ जाएंगे। जनसंख्या संकट से भविष्य में हालात बेकाबू होकर देश संकट में न घिरे, उस दृष्टि से देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु सख्त कानून सरकार लाए। धन्यवाद। श्री रामचंद्र जागरा। धन्यवाद मान्यवर। देश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बात रखने का मौका दिया। मान्यवर,
हमारा देश जहां तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ देश में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ये भारत के उपलब्ध संसाधनों पर प्रतिकूल दबाव बना रही है। मान्यवर, विदित है कि विश्व में हर साल 8 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि होती है। इसमें से 2 करोड़ केवल भारत में वृद्धि होती है। भारत में प्रति मिनट 52 बच्चे पैदा होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उसके अनुपात में जनसंख्या का कहीं ज़्यादा है। मान्यवर, इस असमान वृद्धि के कारण खास तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में और भी खतरे बढ़ गए हैं, क्योंकि उन क्षेत्रों में गैर कानूनी घुसपैठ के कारण भी जनसंख्या का असंतुलन बढ़ता है। यह समस्या किसी एक समाज की चिंता नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता है। मान्यवर, विश्व में केवल चीन की आबादी हमसे ज़्यादा है, लेकिन चीन क्षेत्रफल में भारत से बहुत बड़ा है। अगर इसी अनुपात से देश की जनसंख्या बढ़ती रही तो 2030 में ये 1.5 अरब यानी 150 करोड़ और 2050 में 166 करोड़ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त असमान वृद्धि से जो आंतरिक शांति के सामने चुनौतियां आ सकती हैं, उसकी कल्पना से भी रूह कांप जाती है। अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, ताकि समान प्रजनन दर से जहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके, उसके साथ साथ सामाजिक संतुलन व सद्भाव से देश में सभी को स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधाएं मिल सके तथा आर्थिक विकास को प्रगति मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री निरंजन बीसी। Honorable Chairman, sir, thank you very much for giving me an opportunity to mention the matter of urgent public importance regarding synchronization of data of state rural household portal with Awas list regarding this in relation to the state of Odisha. Sir, the state has collected detail pertaining to 6,65,000 households which have been identified via the state rural household portal. Data pertaining to these eligible household has been collected and maintained by the state since this family were not able to enlist when the ministry had opened the window in 2019. A significant portion of these households are from tribal areas and the Kalahandi, Balangir and Koraput region of the state who are in the direct need to accommodation. So, I request the Honorable Union Minister to facilitate the synchronization of the detail of all 6,65,000 households which is currently held by the state with the Awas Plus list, and in addition to open the window for a minimum duration of another month to incorporate the names of eligible left out families. Thank you, sir. Thank you. Srimati Sumitra Balmik. धन्यवाद महोदय। त्वयं पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। महोदय, सभ्यता के जन्म और उदय में नदियों का अति विशेष महत्व रहा है। भारत में नदियों को जननी का दर्जा दिया जाता है। ऐसी ही पावन नदी मां नर्मदा है, जो अमरकंटक के गौमुख से निकलकर गुजरात के खंबात के खाड़ी तक 1300 किलोमीटर तक का सफर करती है एवं करोड़ों लोगों के जीवन, सभ्यता, संस्कृति को सींचती है। महोदय, कहा जाता है कि जहां एक और अन्य नदियों में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं, वहां मां नर्मदा का स्मरण मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। महोदय, मान्यताओं से आगे बढ़ते हुए यदि हम नर्मदा नदी के अन्य पहलुओं को देखें तो पाएंगे कि चाहे पर्यावरण का संतुलन रखना हो, जल की उपलब्धता हो, प्राचीन सभ्यताओं के सांस्कृतिक महत्व को संजोना हो, या फिर औषधियों व वन संपदा का संचय, मां नर्मदा अपने आंचल में अतुल्य बहुमूल्य खजाने को समेटे हुए हैं। महोदय, इसके पहले कि यह ज्ञान धारा हमसे छूट जाए, जरूरत है कि हम इस पर विशेष ध्यान देकर इसे संजोकर रख लें। इस हेतु मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि मां नर्मदा नदी से जुड़े मानवीय, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आदिवासी सभ्यता का ज्ञान आदि के बारे में गहन शोध जानकारी का संकलन
और संरक्षण हेतु एक केंद्रीय नर्मदा रिसर्च यूनिवर्सिटी जबलपुर में स्थापित की जाने हेतु आग्रह करना चाहती हूं सरकार से। त्वयं पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोक सभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 21st December 2022 passed the Constitution Scheduled Tribes Order 5th Amendment Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. Tirusi Siva, not present. जुगल सिंह लोखंडवाला। धन्यवाद उपसभापति महोदय। माननीय सदन के सामने स्पोर्ट के भारत में क्या स्थिति है और हम इस विश्व स्तर पे आगे बढ़ सके, इस विषय को लेकर मैं खड़ा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु ट्रेनिंग सुविधा, रखरखाव आदि कदम उठाए गए हैं। प्रमुख खेलो इंडिया ओलंपिक पोडियम स्कीम हमारे खिलाड़ियों के कड़ी तपस्या के चलते भारत को कई विश्वस्तरीय प्रगतियों के सम्मान मिले हैं और हमारे खिलाड़ियों ने जीत का झंडा फहराया है। भारत के खेल जगत में सुपर पावर बनने के लिए ज़रूरत की स्पोर्ट का कल्चर समाज में पिरोजा जाए। समाज का खेल के प्रति नज़रिया बदलने की ज़रूरत है और इस पक्ष में मेरा सुझाव है खेलों का स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में समावेश करना। पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं शारीरिक शिक्षा के अनिवार्य करते हुए खेलों में छात्रा का प्रदर्शन का मूल्यांकन से शामिल करना एवं शिक्षा विभाग द्वारा मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना। जैसे आईटी के लिए सेज बनाया गया है वैसे खेलों के लिए स्पोर्ट्स एग्जीबिटिव जोन बनाया जाए पीपीपी मॉडल ऑथराइज के साथ। इसके साथ सीआरएस एमपी लैंड और सरकारी योजना के माध्यम से खेलों की सुविधाओं को बढ़ावा देने के जिसे स्पोर्ट्स फाइनेंस के लिए नए अंसार खुल सकते हैं। बच्चों और आदिवासी पिछड़े समाजों और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की मुख्य धारा में लाया जाए। साथ में बच्चों को ज्ञान और उसकी वृद्धि के लिए स्पोर्ट्स हेल्पलाइन चालू करनी चाहिए। अंततः सरकार से मेरी आग्रह है कि खेलों के स्तर को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री संजय सिंह, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती दर्शना सिंह। धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। स्पेशल मेंशन में मेरा विषय है पेयजल। महोदय, जल मनुष्य के जीवन का वह अहम हिस्सा है जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता इंसान। मुझे यह कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जल, जीवन और सम्मान को समेकित करके देश के सभी गांवों और नगरों में भी हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की संकल्पना के साथ 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना को प्रारंभ किया। जल जीवन मिशन के तहत चलाए गए इस कार्यक्रम को हर घर जल का नाम दिया गया। इसके तहत प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है और 3.6 लाख करोड़ रुपए से इस योजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से आज लद्दाख के 13,800 फीट ऊंचाई पर स्थित डेमचोक गांव के लोगों तक नल से पानी की आपूर्ति होने लगी है। इससे महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने नहीं जाना पड़ता है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन आदि के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। अन्य नए प्रयोग भी हो रहे हैं। बल्क वाटर ट्रांसफर, ट्रीटमेंट प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अतिरिक्त पानी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। महोदय, लेकिन पानी की बर्बादी एक बड़ी समस्या है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि पानी की बर्बादी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और वर्षा जल संचयन तथा ग्रे वाटर के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए
व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाए। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर। मेरा सब्जेक्ट है जीरो फीस एडमिशन फंड फॉर एससी स्टूडेंट। मान्यवर, देश का विकास बगैर शिक्षा के संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर 2012 तक के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस गंभीर समस्या को समझा और अपने कार्यकाल में एससी एसटी व गरीब छात्रों को बीबीए, बीटेक, एमसीए, एलएलबी, एमबीए, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, बीएससी, बायोटेक, बीएड आदि कोर्सों हेतु जीरो फीस पर एडमिशन की व्यवस्था समस्त गरीब छात्रों के लिए की थी। तभी से सभी छात्र अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहे थे। इनकी फीस की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग अभी तक कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जीरो फीस की व्यवस्था खत्म कर दी है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में हजारों छात्रों को कॉलेजों ने और विश्वविद्यालयों ने परीक्षा नहीं देने दिया है और कहा है कि पहले फीस लेकर आओ तब परीक्षा होगी। इसकी वजह से हजारों एससी एसटी छात्रों का भविष्य खत्म हो गया है। तमाम छात्रों का एडमिशन निरस्त हो गया है, जो छात्र कई वर्षों से अपने अपने संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि पूर्व में चल रहे जीरो फीस पर प्रवेश हेतु और समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था को पुनः आरंभ करवाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। धन्यवाद। दोला सेन। Thank you, Chairman, sir. Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to speak on the subject, need to address the dilution issues of Mandatory Packaging Material Act of jute sector on as special mention submission. The jute industry, growing golden fiber, engaging 3 lakhs mill workers, 3.90 lakh workers, and 40 lakh farmers dependent on it. Jute being biodegradable fiber, eco-friendly, environment-friendly, agro-based industry in agrarian country, traditional industry, labor-intensive, profitable industry, ample scope of export, vital part of rupees 10,000 crore industry and involving 3 crore population in Bengal. The government procures raw jute from farmers at the minimum support price of rupees 4750 per quintal 22-23. But these reaches the mill at a whopping rupees 7200. Rupees 700 more than. It's not party symbol. Here it is written stop plastic bags. Oof, don't be crazy, Rakesh ji. It's not party symbol. You carry on, carry on. It's for. It is not party It's in symbol. favor of jute, only jute. Jute bag. It's a No jute issue is there. No, Dola said, please stop that, because you cannot show that. Please. I understand, but I please can't stop. show jute. File. You know, your speaking is enough. So unfortunate, sir. The government procures raw jute from farmers at the minimum support price of rupees 4750 per quintal 22-23, but this reaches the mill at a whopping rupees 7200, rupees 700 more than rupees 6500 per quintal CAP on the sale of the final products. Unfortunately, despite India being the largest jute producer, Bangladesh covers 3/4 of the global export market. From 1987, Mandatory Packaging Material Act for jute is there. FCI buys jute bags from JCI for 100% for food grains and sugar. Now FCI proposes moving from jute to high-density polyethylene, polypropylene plastic bags through GEM portal in open market. This move will not only ruin the jute farmers, jute industry, jute workers, but also Bengal's employment and economy. But also, there will be devastating hazardous effect for health of Indian citizen and environment of India as well. I urge upon the central government not to dilute Mandatory Packaging Material Act, not to permit this anti-people move, to control price fluctuations in jute market and to encourage jute industry and take responsible role for the growth of jute industry so that the farmers and the workers
and we, the people of India, may survive. Thank you. The next speaker is Dr. K. Lakshman. Thank you, sir, for allowing me to speak on this special mention. The subject is illegal occupation encroachment on PSU lands of HMT and IDPL. In Telangana and especially around the city of Hyderabad, large extents of union government's lands are being subjected to encroachment, which underscores the imperative of taking concrete measures to save the land owned by different public sector undertakings and union government agencies. For instance, HMT was established in a sprawling campus of 880 acres in Kutbulapur, Hyderabad, in which 5,000 employees in 3 divisions were working. However, now only one division is functioning with about 300 workers, and others have become sick. Out of 880 acres, 20 acres of land have been reportedly occupied by land grabbers. The state government has also taken back 120 acres, claiming that it was excess land in possession of HMT, 60 years after the company was established. Similarly, there has been prolonged ongoing legal battle on the land given to IDPL by the then AP government in Hyderabad. An extent of 891 acres and 38 guntas had been given to IDPL for establishing its unit. Now the unit became sick, and it is learned that few individuals claiming to be GPA holders have encroached on an extent of 200 acres of land. Now the price of land in Hyderabad city has witnessed rapid escalation. Obviously, the land grabbers have been targeting a huge extent of lands that are under the control of public sector undertakings. I urge the respective ministries to take stringent action to save the precious lands which are meant for the larger public welfare and nation building. Thank you, sir. Thank you. Sri GVL Narasimha Rao. Waiting for the mic, sir. Okay, it's on. Thank you, sir. Thank you for the opportunity to raise a very important issue regarding the need for construction of a new building and manpower for improved CGHS operations in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Sir, Visakhapatnam has a very large number of serving and retired central government employees eligible for availing central government health scheme services. So the number of CGHS card holders in Visakhapatnam is 11,089, and the number of beneficiaries in Visakhapatnam is 26,756. Further, more than 120 central government organizations are located in Visakhapatnam. So, as per CGHS scheme guidelines, Visakhapatnam is eligible to have 3 allopathic CGHS wellness centers, as the norm is to have 1 wellness center per 2,000 card holders. However, only 2 wellness centers are currently operational in Visakhapatnam, and both operate from rented premises. So the quality of infrastructure and manpower in both these centers is extremely poor and needs immediate improvement. So one Ayurvedic and 1 homeopathic unit have also been sanctioned for Visakhapatnam in 2016, but are not functioning. Recently, 5 doctors have been allotted to AP Telangana combined region, but due to the absence of a pharmacist, these units are yet to start operations in Visakhapatnam. So for 5 years, there has been a proposal to acquire land from the state government for the construction of a new CGHS building for housing the CGHS wellness centers. The district collector had offered 30 cents of land in Chikadili village, Visakhapatnam rural mandal at a cost of 2.9 crores, and the decision to acquire the proposed land is pending with the CGHS Directorate, New Delhi. I request the Ministry of Health and Welfare to immediately acquire the land offered by the Visakhapatnam District Administration and immediately undertake construction of a CGHS building in Visakhapatnam.
Thank you, sir. Srimati Mahua Maji. जी धन्यवाद माननीय वाइस चेयरमैन महोदय। मेरा विषय है झारखंड रांची स्थित 1958 में स्थापित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी की दुर्दशा के संबंध में ध्यान दिलाते हुए उसके पुनरुद्धार के लिए आग्रह। पिछले कई वर्षों से माइनिंग, रेलवेज, स्पेस, डिफेंस, पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में मदर इंडस्ट्री की मान्यता प्राप्त हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। वहाँ के कर्मचारियों, श्रमिकों, ठेकेदारों को 12 महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही। आर्थिक संकट से जूझ रहे एचईसी के कर्मचारियों को पिछले कई वर्षों से पूर्ण वेतन नहीं मिल रहा। भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। जिस इंडस्ट्री ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनकर देश विदेश में ख्यात हुए, वे आज अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे। इलाके के दुकानदार उधारी दे देकर बेहाल हैं। यंग इंजीनियर्स जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से बेहतर भविष्य के लिए एचईसी ज्वाइन किया था, निराश हैं। एम्प्लॉय की संख्या लगातार घट रही है। एचईसी के पास बहुत सारा कार्यादेश है, लेकिन अर्थाभाव से काम रुका हुआ है। एचईसी की उपेक्षा से कर्मचारी भयभीत हैं। कुछ वर्ष पूर्व इसे एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में मर्ज करने की बात हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से जानकारी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1958 में स्थापित इस महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के पुनरुद्धार का कोई प्लान है या नहीं। वहाँ के कर्मचारियों, ठेकेदारों, श्रमिकों को बकाया वेतन कब दिया जाएगा? एचईसी को फुल टाइम सीएमडी डायरेक्टर कब दिया जाएगा? क्योंकि भेल द्वारा अटैच्ड अधिकारी कभी कभार ही आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 22nd December 2022. Thank you.